हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो करते हैं जी अगला लैक्चर शुरू। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਓਪਨ ਸੈਟਸ, ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਲੋਜ਼ ਸੈਟਸ, ਕੰਪੈਕਟ ਸੈਟਸ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਸੈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੈਟ ਓਪਨ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ? ਅ ਸੈਟ S is said to be open if and if only if every point of S is an interior point. For example, अगर ਆਪਾਂ ने को S ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी, then S ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੋ, every point of X ठीक है जी, then X ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ X is contained in X1 comma X2 which is contained in A to B. It means X is an interior point, and since X was arbitrary, it means every point of open interval AB is an interior point, so open interval AB is an open set. Next अपने को एक होर डेफिनेशन है ओपन सेट दी, that S set S is said to be open if and only if S is neighborhood of each of its point. अपने एक अद्धे सवाल विच काम आ सकती है, मैं रिपीट कर रहा। A set S is said to be open if and only if S is neighborhood of each of its point. then अपने को मेन थ्योरम है जो अपने ओपन सेट्स दे सारे सवाल करा दिया करेगी, that is this: a subset of R is open if and only if it is an open interval or union of open intervals. देखो जी, कोई सेट एस ओपन होएगा अगर ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, कोई भी सैट इन्हों तो इलावा जो है ओपन नहीं हो सकता। ठीक है जी, एक इतने होर गल नोट करने वाली है कि क्योंकि हरेक ओपन इंटरवल अनकाउंटेबल है, बिकॉज एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल, तो यह मतलब जो अपना ओपन सैट है वो भी क्या होएगा? अनकाउंटेबल। ओपन सैट्स आर अनकाउंटेबल एक्सेप्ट एम्प्टी सैट। ओपन सैट्स आर अनकाउंटेबल। सो इट मीन्स अगर कोई काउंटेबल सैट है या फाइनाइट सैट है एक्सेप्ट 5, देन वो पक्का ओपन नहीं होएगा। ओपन सेट्स आर अनकाउंटेबल, मीन्स काउंटेबल और फाइनाइट सेट्स, obviously non-empty. Finite sets are not open. ठीक है जी, मेन अपनी कैरेक्टराइजेशन यही यूज होएगी, अ सबसेट ऑफ आर इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज एन ओपन इंटरवल और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन इंटरवल्स। इट इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, कि जिन्ने मर्जी ओपन सेट्स ले लो, ठीक है जी, उन्होंने यूनियन कर दो तो जो नवा सेट आएगा दैट अगेन विल बी ओपन सेट। नंबर 4, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अगर A1, A2, A3 ये ओपन सेट्स ने, इन्हों की यूनियन भी क्या होएगी अपने को? ओपन सेट्स। सॉरी, इन्हों की इंटरसेक्शन क्या होएगी जी? ओपन सेट्स। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेकिन आप इनफाइनाइट बारे कुछ नहीं कह सकते। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो है ओपन हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं AN नू ए लेना है -1/n to 1/n, कहने का मतलब कि अपना A1 की होएगा -1 to 1, A2 की होएगा -1/2 to 1/2, A3 की होएगा -1/3 to 1/3 अप टू सो 1। तो जो इन्हों की इंटरसेक्शन होएगी वो की जाएगी अपने को इंटरसेक्शन ऑफ ANs, या अपने को की आएगा जी सैट कंटेनिंग ओनली 0। ठीक है जी, हम ध्यान वेखो, सैट कंटेनिंग ओनली 0, इट इज़ नॉट एन ओपन इंटरवल। ना तो ये ओपन इंटरवल है, ना ये ओपन इंटरवल की
union है, not an open interval and not a union of open intervals. So this is not open. So this is not an open set. Okay. Then we have some examples. Okay. That empty set is always open set. Empty set is always open set. Set of real numbers is open. Every open interval is open. ठीक है जी, इस तरीके से सारे. And union of open intervals is also open. Here are some examples of open sets. So before moving further, we have something important. Interior of a set. Interior of a set A is defined as collection of all the interior points of AB. ठीक है जी. For example, अगर ਆਪਾਂ A ਨੂੰ closed interval AB लेने हैं, then A not ਕੀ ਹੋਏਗਾ, collection of all interior points. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ interior point ਨਹੀਂ ਹੈ, B ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ interior point ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ points ਨੇ ਸਾਰੇ A ਤੇ B set ਦੇ, ਸਾਰੇ A set ਦੇ ਉਹ open interior points ਨੇ. सो अपना interior of AB किया जाएगा open interval AB. तो अगर जो इंटीरियर है उसकी एक होल डेफिनेशन भी है, इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन दी सेट ए. ठीक. नेक्स्ट सम एग्जांपल्स ऑफ सम नॉन एग्जांपल्स ऑफ ओपन सेट. सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स. देखो सेट नैचुरल नंबर्स अपने को कितना पाए ने 1 then 2 3 4 5 है ना. दिस इज ना तो सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स जो है ना तो इंटरवल है ना यूनियन ऑफ इंटरवल्स है. सो ये की है जी, ये ओपन सेट नहीं है. सिमिलरली इंटीजर्स ये भी इंटरवल दी यूनियन नहीं है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी इंटरवल्स दी यूनियन नहीं है. सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी इंटरवल नहीं है, जहाँ ना इंटरवल्स यूनियन है. सो ये सारे अपने की ने जो ओपन सेट नहीं है. अगेन 1/n दिस इज नॉट अगेन यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स. यहाँ आगे देख सकते हैं दिस सेट इज काउंटेबल, तो आप कर चुके हैं दैट काउंटेबल सेट जो होंगे है हमेशा ओपन नहीं होंगे. काउंटेबल सेट सो इंप्लाइज नॉट ओपन. ठीक है, सो ये ओपन नहीं है. नेक्स्ट वी हैव लिमिट पॉइंट. लेट S be a subset of real numbers. A real number L is said to be a limit point of S if every neighborhood of L contains infinitely many points of S. ठीक है जी. मैं एग्जाम्पल देखते हैं. ये वाला सेट लो 1/n. अगर आप इन्हों मार्क करते हैं रियल लाइन के उपर, ठीक है. हेयर इज योर 0 1. पहला पॉइंट आएगा अपने को 1/2, पहला 1 फिर 1/2 then 1/3 then 1/4 1/5 1/6. इदा करदे पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे सारे इतने. ठीक है. हम ध्यान वेखो 0 के अराउंड कोई भी नेबरहुड अगर ड्रॉ करांगे आप तो वो ए सैट के इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे. सो दैट्स वाई 0 इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सैट. सो 0 इज़ ए लिमिट पॉइंट. So this is the definition of limit point. A limit point may or may not be a point of the set. कि जो लिमिट पॉइंट है सैट के बाहरों हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इत्थे जो 0 है वो इस सैट का लिमिट नहीं है, पर 0 जो है इस सैट का लिमिट पॉइंट है. आप नैक्सट भी है कि आप कदों कहेंगे कोई अपना जो पॉइंट है वो जो है इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. L इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट इफ देयर इज़ अ नेबरहुड विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ द सेट अदर दैन L. ठीक है. किसी पॉइंट L ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੇਬਰਹੁਡ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ S ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਏ L ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਫॉर एग्जांपल अगर मैं ਇੱਥੇ L ਨੂੰ 1/2 ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਬਰਹੁਡ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ S ਦਾ ਇਹ ਸੈਟ S ਦਾ
कोई होर पॉइंट नहीं है 1/2 तो इलावा, यानी L तो इलावा. So that's why 1/2 is not a limit point. Similarly 1 is not limit point, 1/3 is not a limit point, 1/4 is not a limit point. Similarly अगर कोई होर भी पॉइंट लवांगे सेम कारण करके भी इस दा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा. सो ए सैट का जो लिमिट पॉइंट है सिर्फ तो सिर्फ 0 है. Then मैं थर्ड लिख दिए कि that if S is a set then S dash denotes the set of limit points of L. Limit points of S and is called derived set of S. ठीक है जी. एग्जाम्पल अगर S अपना 1/n है ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ 0. ਸੋ S ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ set containing only 0. then we have set this 1/m plus 1/n where m and n are natural numbers. ਇਹ ਸੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ that 1 plus 1/n union 1/2 plus 1/n union 1/3 plus 1/n and so on. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ 1, ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ 1/2, ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ 1/3 up to so on. It means 1 ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1/2 ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1/3 ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ 0 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਨ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1/m ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ 1/m ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 0 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਕ 0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮ 1/n. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ S dash is set of numbers of the form 1/m and 0. So this is ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ. 1/m plus 1/n plus 1/p ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਡ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ 1/m ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ 1/m plus 1/n and 0. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਫ S is set of rational numbers. ਹੁਣ ਸੈਟ ਆਫ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਜੋ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ. जो बाकी पोर्शन बच रहा है बाकी मान लो अपने इरेशनल नंबर्स. ठीक है तो कोई भी पॉइंट उठाओ इस लाइन के उपर अगर आप कोई भी पॉइंट उठाने हैं कोई भी पॉइंट रियल लाइन के उपर कोई भी पॉइंट उठाया वो अराउंड आप नेबरहुड ड्रॉ करांगे. ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਆ ਰਹੇ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਓ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ that every real number is a limit point. So S dash क्या आएगा set of real numbers. And similar reason for similar reason अगर अपना S है irrational numbers then अपने को S dash की आ रहा है जी तामी set of real numbers. आप F भी देख लेंगे कि एक और देख लिए if S is finite set. ठीक है अगर S finite set है ठीक then S dash अपने को ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ empty. ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਨ L ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ S ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. if S is whole numbers integers or naturals then again set of limit points is empty. ठीक है जी.
ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਪਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਟਰਵਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ 'ਚ ਬੋਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਸੇਮ ਵੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨॉन एग्जांपल ऑफ लिमिट पॉइंट्स ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट डू नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट थे कर चुके, देखो भाजी फाइनाइट सेट्स डू नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट एंड सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स डू नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। इहदा कहने का मतलब तेरा इत्थे लिखते हैं जो पहले लिख चुके हैं दैट इफ S is finite set then S dash is 5 and if S is natural numbers whole numbers integers then again S dash is 5. Then we have definition of closed set. A set S is said to be closed if it contains all of limit points, all of its limit points। अगर set ਦੇ ਸਾਰੇ limit points ਉਹ set ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। this should be S dash should be contained in S, ठीक है जी। if S dash is contained in S, that is set of limit points is contained in set, it means set contains all its limit points, then we say the set is closed। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ऊपर लिमिट पॉइंट्स वालेगा इत्थे एस डैश जो है क्या एस दे विच कंटेन्ड है पहले ऑप्शन दे नो, सो द सेट इज नॉट क्लोज्ड, दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड। अगेन इत्थे भी एस डैश जो है कि एस डैश विच 0 है, एस विच 0 नहीं है, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड। अगेन फॉर सिमिलर रीजनस दिस इज सेट इज नॉट क्लोज्ड। इत्थे देखो सैट ऑफ रैशनल नंबर्स एस डैश अपना पूरा रियल्स है, वो सैट ऑफ रैशनल नंबर्स विच कंटेन्ड नहीं है, सो सैट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। अगेन सैट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। लेकिन फाइनाइट सैट का जो सैट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की आया एम्प्टी सैट, तो एम्प्टी सैट हमेशा सैट विच कंटेन्ड होंदा है, सो एवरी फाइनाइट सैट इज क्लोज्ड। सो फॉर सिमिलर रीजन सैट ऑफ होल नंबर्स, सैट ऑफ इंटीजर्स, सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड। अपने को क्लोज सैट की एक होर डेफिनेशन है, एस इज सैट टू बी क्लोज्ड इफ एस कॉम्पलीमेंट इज ओपन, ठीक है। आप की कर सकते हैं कि जो अपने को सैट है वह कॉम्पलीमेंट लो, चैक कर लो क्या ये ओपन है, अगर ये ओपन है दैन एस क्लोज होएगा। तो अपन पता है आप ओपन कितना चैक करना है, ओपन चैक करना दो तरीका है कि या तो ओपन इंटरवल होना चाहिए, या तो ओपन इंटरवल होना चाहिए, या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो तरीके ने, दोनों तरीके आप चैक कर सकते हैं। एम्प्टी सैट इज क्लोज्ड, ठीक है जी। एम्प्टी सैट क्लोज्ड क्योंकि एम्प्टी सैट को भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, सो अगर एस एम्प्टी अपना तो एस डैश भी अपना एम्प्टी आ जाएगा, सो इन दैट केस एस डैश इज कंटेन्ड इन एस। या फिर उसी इधर भी देख सकते हो, अगर एस अपना एम्प्टी सैट है देन अपना एस कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो दिस इज ओपन, सो दैट्स वाई एस इज क्लोज्ड। Similarly, set of real numbers is closed. Closed intervals are closed. Closed intervals are why closed? Because अगर अपने को कोई एक closed interval है, ठीक है जी, यदा आप कॉम्प्लीमेंट लवांगे, दिस कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। नाउ दिस सेट इज ओपन, दिस सेट इज ओपन, ठीक है। दिस इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, सो दैट्स वाई ए बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो दैट्स वाई ए बी इज क्लोज्ड। वाई फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड? फाइनाइट सेट इज क्लोज ना क्योंकि आप देख चुके अगर एस फाइनाइट है देन एस डैश इज एम्प्टी, सो एस डैश इज कंटेन्ड इन एस, सो फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। एंड यदि भी रीजनिंग सेम है जी कि इतने एस डैश की अपना एम्प्टी, सो एस डैश जो है वो कंटेन्ड एस दे विच, सो दैट्स वाई सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड। सो एग्जाम्पल आप कर चुके हैं दैट 1/n दिस इज नॉट क्लोज्ड बिकॉज एस डैश इज S dash is set containing 0 which is not contained in S, so this set is not closed. Set of rational numbers is not closed because
S dash is set of real numbers which is not contained in rational numbers। एक तो रीजन ये है। दूजा रीजन है अगर set of rational numbers ਆਪਾਂ complement करांगे, ठीक है जी, you will get set of irrational numbers which is not open। ये कि set of rational numbers ना तो interval है ना union of open intervals। so ये Q complement जो है ये open नहीं है, so that's why Q जो है वो closed नहीं है। set of irrational numbers is not closed for again same reason, and set of algebraic number is not closed। देखो set of algebraic number closed क्यों नहीं है? देखो अगर आप मान सपोज ए डिनोट्स द set of algebraic numbers, तो देखो जी अदा कॉम्प्लीमेंट की होएगा अपने को set of transcendental numbers। ठीक है, अगर ए ओपन होया तो फिर यहाँ ते ए की होएगा अपने को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के कुछ के कुछ ओपन इंटरवल्स दी यूनियन होएगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल्स अपन पता हमेशा रैशनल नंबर बैठा होंगे, इट मीनस इधर कोई ना कोई रैशनल नंबर बैठा होएगा और फिर इट मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਨੰਬਰਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਪਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੈੱਟ ਆਫ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Next is compact sets। compact sets ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, that is due to Hinburel। so he says a subset S of real numbers is compact if and only if S is closed and bounded। that is to check a set compact, just to check two things, one is closed, if it is closed as well as bounded then we say the set is compact। if either one of them doesn't hold, the set will not be compact। so here we have some examples। the set of real numbers unbounded, which is it means not bounded, so that's why not compact। unbounded implies not compact। set of rational numbers again unbounded, so not compact। set of irrational numbers unbounded, not compact। set of integers unbounded, not compact। set of natural numbers ये भी unbounded है, not compact। set of open interval set of closed interval जी ये closed है ते bounded भी है, so that's why it is compact। open interval bounded है but not closed implies not bounded, not compact। unbounded है जी implies not compact। one by n not closed, not compact। इधर देखो ए सैट ਦੇ ਨਾਲ 0 ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ S ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 0, ਹੁਣ ਇਹ S ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੈਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਤੇ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਟ ਦਾ ਉਹ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 0 ਤੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਾਉਂਡਡ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਕਟ। ठीक है जी। सो एक और चीज़ छोटी जी थ्योरम है बोल्ज़ैनो वाइस्ट्रास थ्योरम।
that every bounded infinite set has a limit point. ये पेपर च कई बार सीधा बाय नेम पूछ ली जाती है जी केड़ी थ्योरम एज ए लिमिट पॉइंट. So with this, our point set topology is finished. Thank you everyone.